Hello students, welcome back. Students, in previous lecture we had discussed methods of expressing concentration and we were discussing weight percentage and then we discussed volume percentage. So students, now we are going to discuss the third method of expressing concentration of solution, and this method is weight by volume percentage. So सबसे पहले students, what do you mean by weight by volume percentage? So what is weight by volume percentage, students? It is weight of, say, solute present or dissolved per 100 parts by volume, 100 parts by volume of solution. So this is how we find weight percentage of, say, solute or any other component. So students, suppose we have a binary solution and we have to find weight by volume percentage of solute in that binary solution. So mathematically, weight by volume percentage of, say, component A in that binary solution will be weight of that component, say WA, upon volume of solution V into what? 100. So generally we express weight in grams and volume in milliliters. So this is weight upon volume into 100. Now students, let me give you one example. Say I have a 5% H2SO4 weight upon volume. So students, इसका मतलब क्या हुआ? This means students, we have 5 gram H2SO4 in what? 100 milliliters of solution. So this is how we determine weight by volume percentage. हम component का weight divide कर देंगे उसको volume of solution से into 100 and that will be the weight by volume percentage. Now students, the next method is parts per million method, which is in short called ppm. So next we have parts per million. Now students, listen carefully. When concentration of solute in a solution is very small, or we say when the amount of solute in a solution is negligible, then the concentration of such solution is expressed in parts per million, not parts per 100. We express concentration of solution in ppm when students, when the amount of solute is negligible. And what do you mean by ppm, parts per million? So students, parts per million means it can be expressed by weight or by volume. So we'll consider by weight first. So students, ppm is what? It is weight of a component per million parts by weight of what? Solution. So this is ppm. Now students, so how to find ppm, say, of component A of a binary solution? It will be weight of that component, so WA divided by total weight of the solution, which is, say, WA plus WB into million. Million means 10 raised to power 6. So this is how we find parts per million. Now students, this method parts per million can be related to weight percentage. How? See, WA divided by weight of solution, that is sum of weights of solute and solvent, into this. So मैंने 10 raised to power 6 को split कर दिया into 10 raised to power 2 and 10 raised to power 4. Now students, what is this much?
this is weight percentage. So this is W by W, percentage into 10 raised to power 4. So students, this is very important point to note that parts per million method is how many times larger than the weight percentage? 10 raised to power 4. That is, it is larger than the weight percentage by 10,000 times. और इसीलिए इस मेथड को हम यूज करते हैं बिकॉज वेट परसेंटेज में जब किसी सॉल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबल आएगा तो उसको थोड़ा बढ़ाकर बताना पड़ता है बाय पीपीएम मेथड. जनरली अवेयरनेस पर्पस के लिए इस मेथड को यूज करते हैं. लाइक पॉल्यूटेंट इन एयर, जनरली उसका जो कंसंट्रेशन है इट इज एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम, सो दैट वो जो वैल्यू वेट परसेंटेज में बहुत कम होगा, पीपीएम में वो 10 raised to power 4 टाइम्स ज्यादा आएगा. से एग्जांपल आई हैव, से वेट परसेंटेज से ऑफ pollutant, it can be any pollutant in air. Students, if weight percentage of pollutant in air is say 0.001%, say ये weight percentage है. नाउ स्टूडेंट्स, वेट परसेंटेज को देख के अगर मुझे किसी को भी बताना हो कि पॉल्यूटेंट 0.001% है तो स्टूडेंट्स वो सोचेगा एयर में पॉल्यूटेंट नेग्लिजिबल है. सो मैं क्या करूंगा, थोड़ा अवेयरनेस से या पर्पस के लिए किसी को भी बताऊंगा तो अब मैं उसको वेट परसेंटेज में बताऊंगा तो अवेयरनेस नहीं आएगी क्योंकि उनको लगेगा पॉल्यूटेंट है ही नहीं. बट सपोज अगर मैं इसको पीपीएम में बताता हूं तो स्टूडेंट पीपीएम में सेम पॉल्यूटेंट कितना होगा, जो वेट परसेंटेज है दैट इज 0.001 into 10 raised to power 4, which means 10 raised to power what, -3 into 10 raised to power 4, that is 10. So अब अगर मैं कहूंगा वो 10 ppm है तो सी है वो उतना ही एयर में थोड़ी ना चेंज हुआ है, बट अब मैंने उसको एक्सप्रेस जब पीपीएम में किया तो वही वैल्यू थोड़ा बड़ा लग रहा है. सो दिस इज व्हाई वी यूज पार्ट्स पर मिलियन. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, मोल फ्रैक्शन. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? It is denoted by X and it is defined as fraction of moles of a component in a solution. So it is very simple. It is the fraction of moles of a component in a solution. Means सॉल्यूशन में जितने मोल्स हैं उनमें से किसी एक कंपोनेंट के मोल्स कितने हैं, उस फ्रैक्शन को हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं. एंड स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट से ए इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन. एंड इफ से सॉल्यूशन इज बाइनरी देन the total number of moles in the solution means number of moles of both the components Na and Nb. So this is how we find mole fraction of a component. Now the mole fraction of other component in the solution, say if solution is binary, will be number of moles of that component divided by total moles. So students, in a binary solution, this is how we find mole fraction. Now students, one very important thing is that mole fraction is dimensionless or unitless. We say it is dimensionless. उसका कोई डायमेंशन नहीं होता और कोई यूनिट नहीं होता. वो इसलिए नहीं होगा स्टूडेंट्स क्योंकि मोल अपॉन मोल will be what? 1. So that means it is unitless. Now another important thing about mole fraction is that students, मोल फ्रैक्शन में अगर आप देखेंगे मोल डिवाइडेड बाय मोल, एंड मोल इज व्हाट? मोल इज व्हाट? अ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सो अमाउंट अपॉन अमाउंट, अगेन द प्रॉपर्टी मोल इटसेल्फ इज व्हाट? डिपेंड्स ऑन अमाउंट, बट अमाउंट अपॉन अमाउंट becomes what? Independent of amount. So we say
it is intensive property. So mole fraction is intensive property, means एक ऐसा property जो amount पे depend नहीं करता है, independent है, इसीलिए उसको intensive बोलते हैं. Now students, another important thing about mole fraction is that जब आप mole fractions का sum करेंगे किसी भी solution में, सभी components के mole fractions का sum करोगे तो कितना आएगा? See students, पहले component का mole fraction n divided by the total number of moles, that is Na plus Nb. दूसरे component का mole fraction Nb divided by total moles. Now students, solving this we get Na plus Nb divided by Na plus Nb, and this is students how much? 1. So this is very important point, that sum of mole fractions of all the components of a solution is always unity. Students, ये तो दो components के लिए था. So अगर मैं इसको generalize करूं, अगर solution में दो से ज्यादा components भी हो तब भी यही आएगा. That means mole fraction of first component, second component, third component and so on, sum हमेशा unity ही होगा. So sum of mole fractions of all the components in a solution is unity. And students, which further implies what? से अगर मैं binary solution ही लेके चलता हूं, so we say mole fractions का sum unity होगा अगर दो ही components हैं. तो एक component का mole fraction 1 minus mole fraction of the other component, and this further implies what? किसी भी एक component का mole fraction 1 minus something, that means it will be less than 1. So this is very very important to note, that sum of mole fractions of all the components is unity, and mole fraction of a component is always less than unity. So this is a very very important method. Now students, how to find mole fraction from the given weight of components? Now, so here we will discuss one example. Say I have a solution. Say students, we have a solution which is made up of, say, I say 2 moles of component A and 3 moles of, say, component B. So what will be the mole fraction of A? It is very easy students. Mole fraction of A is number of moles of A divided by total moles. So number of moles A के कितने हैं? We have 2, और total कितने हो गए? 2 plus 3, that is 5. So 2 by 5, it is 0.4. So this is mole fraction of A. Student, similarly अगर mole fraction आपको B का निकालना हो, तो we know that sum of mole fractions is unity. तो B का जो mole fraction होगा 1 minus XA, that means 1 minus 0.4, so it is 0.6. So this is how we solve questions of mole fractions when moles are given. Now students, will discuss another example where weight is given. Say students, I have a solution. So this is another example. Now this solution is made up of, say, by mixing say 4.6 grams of ethanol and say we have 5.4 grams of what? Say water. Now students, what will be the mole fraction of ethanol and water in this solution? So we have to find ethanol. I'm marking ethanol as 1 and water as component 2. So we have to find out mole fractions of these components. Now students, mole fraction निकालने के लिए we have to first calculate moles. So पहले moles of ethanol निकाल लेता हूं मैं, और वो क्या होगा? Weight, because moles कैसे निकालते हैं? It is weight upon molar weight of that substance. So moles ethanol के निकालने के लिए मुझे उसका weight जो कि given है 4.6,
उसको डिवाइड करना पड़ेगा मोलर वेट. नाउ इथेनॉल हैज केमिकल फॉर्मूला C2OH, C2H5OH. So its molar mass will be twice of 12, that is 24. Then we have 6 hydrogens, that is 30 plus 16, we have 46. So it is this much. So students, we have how many moles? We have 0.1 mole. Similarly, moles of water will be weight of water. Now weight of water is 5.4 divided by molar weight of water, that is 13. So students, it is 0.3. So these are the moles. Now how to calculate mole fraction? So mole fraction of ethanol, that is first component, will be moles of ethanol, that is 0.1, divided by total moles. Total moles means 0.1, 0.3. So we have 0.1 divided by 0.4. So this is 1 by 4. So that means 0.25. So students, this is mole fraction of ethanol. Now students, what will be the mole fraction of other component? So दूसरे component का mole fraction कैसे निकालोगे? It is simply 1 minus x1. So 1 minus 0.25 will be 0.75. So students, this is how we find mole fraction if weights are given. So मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए, मोल्स से डायरेक्टली और वेट से भी होगा, तो पहले मोल्स निकाल लो फिर हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, our next method is molality. Students, so next method is molality. Now what do you mean by molality? First students, let me tell you, molality is represented by M. So small letters में M use करते हैं इसके लिए. Now what is molality? So students, molality is defined as number of moles. It is defined as number of moles of solute. Number of moles of solute dissolved per kg of what? Solvent. Means मोलालिटी में आपको ये देखना होगा कि सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है. नाउ स्टूडेंट्स, वी डिनोट मोलालिटी बाय m. So mathematically, number of moles of solute, we write n divided by what? Weight of solvent. Weight of solvent, say in kilogram. So this is how we find molality. So what will be the unit? Mole per kg. So unit of molality is mole per kg. Now students, molality of solution, if say we have number of moles of solute but weight of solvent say is given in grams, तो आप जब ग्राम को kg में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, दैट मीन्स यहां वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी फाइंड मोलालिटी व्हेन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन इन grams. Now students, from mole concept we know that number of moles कैसे निकालते हैं? Weight of that component divided by molar weight. So here we can write molality as number of moles of solute की जगह weight of solute divided by molar weight of solute. So M is for molar weight, and then we have weight of solvent. This is solvent in grams into 1000. So students, this is the mathematical expression for calculating molality when weight of solute is given. This is when moles of solute is given and weight is in gram, and this is when moles of solute is given and weight is also given but in kilograms. Now students, a very important point about molality is that molality of a solution depends on weight. See, we are taking weight of solute, this is molar weight of solute, this is weight of solvent. And students, remember, weight जो होता है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होगा. मींस अगर इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज भी कर दूं तो वेट तो चेंज होगा नहीं, विच मींस मोलालिटी भी चेंज नहीं होगा. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, दैट molality is independent of temperature. Molality is independent
ऑफ टेम्परेचर मींस टेम्परेचर चेंज होने से मोलालिटी चेंज नहीं होगा। और स्टूडेंट ऐसा मैंने इसलिए कहा बिकॉज मोलालिटी डिपेंड्स ऑन वेट एंड वेट डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर। एंड स्टूडेंट्स दैट इज व्हाई मोलालिटी इज कंसिडर्ड एज अ बेटर मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। बिकॉज सपोज आज अगर मैंने एक सॉल्यूशन बना लिया, उसका मोलालिटी कुछ भी है, से किसी सॉल्यूशन का मोलालिटी जो मैंने आज बनाया है से एट 25 डिग्री सेल्सियस and it is say 2 molar. Now m means moles per kg. But students say किसी इस सॉल्यूशन को मैंने लैब में से प्रिजर्व करके रख दिया, यानी किसी एक बॉटल में रख दिया, एंड सपोज जब मैं इसको यूज करता हूं सॉल्यूशन को, उस दिन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था। नाउ 35 डिग्री टेम्परेचर मींस 10 डिग्री राइज हो गया है किसी पर्टिकुलर डे पे, बट क्या मोलालिटी चेंज होगा? नो स्टूडेंट्स, मोलालिटी इस सॉल्यूशन का 2 मोलर ही रहेगा। क्यों? बिकॉज मोलालिटी वेट डिपेंड्स ऑन वेट एंड वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड दैट इज व्हाई मोलालिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। सो मोलालिटी हर टेम्परेचर पे सेम ही रहेगा एंड दैट इज व्हाई मोलालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बिकॉज it is a better method for expressing concentration of a solution. Now students, we'll move on to the next method which is molarity. M-O-L-A-R-I-T-Y. So next method we have molarity, not molality. Now molarity क्या होता है students? In molarity we express amount of solute in moles but per liter of solution. So students, what is molarity? अच्छा, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। एंड what is the definition of molarity? Students, molarity is number of moles of solute per liter of solution. So एक बेसिक डिफरेंस जो मोलालिटी और मोलारिटी में है स्टूडेंट्स, वो ये है कि इन मोलालिटी, द अर्लियर मेथड, इन मोलालिटी व्हाट वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, बट हियर वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सो व्हाट इज मोलारिटी? मैथमेटिकली इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution. So we'll take volume of solution in what? Liters. Or we can write this number of moles of solute, volume को मैं V से लिखता हूं, volume of solution से अगर वो मिलीलीटर्स में है तो स्टूडेंट्स आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड यूनिट क्या होगा मोलारिटी का? स्टूडेंट्स, मोलारिटी will be moles per liter. So this is the unit of molarity. So students, molarity इस तरह से आप मैथमेटिकली निकाल सकते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन हो. बट स्टूडेंट्स, आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मोल्स नहीं दिए होंगे, रादर वेट दिया होगा. एंड वी नो दैट हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम वेट. Number of moles of solute will be weight of solute divided by molar weight of solute, जिसको मैं m से ही लिख रहा हूं. So students, in that case what will be molarity of solution? It will be number of moles की जगह weight of solute upon volume of solution and then molar mass of solute, वो भी डिनोमिनेटर में ही आएगा. एंड मैं एज्यूम कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो इनटू 1000. सो दिस इज मोलारिटी. नाउ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मोलारिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज होगा. सो इसका मतलब क्या है? मोलारिटी भी चेंज होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मोलारिटी varies with temperature. Varies with temperature. टेम्परेचर चेंज होने से मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा. और ऐसा क्यों? बिकॉज
Students, molarity depends on volume, and volume changes with the temperature, so molarity will also change with the temperature. And that is why, students, we say that molarity is not a better method for expressing concentration of a solution. So whenever, say, we have a choice between molality and molarity, we consider molality as a better method, because molality temperature से के चेंज होने से चेंज नहीं होता है, molarity चेंज होगा, because molarity वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो सकता है. So students, this was very very important method. Now I'll give you one numerical problem based on molarity. Students, we have a numerical. 4 grams of sodium hydroxide is dissolved in water to make 250 milliliter of solution. What is the molarity of solution? So students, हमारा जो main objective है वो है molarity निकालना, and we know that molarity is number of moles of solute, that is number of moles of, say, sodium hydroxide upon volume of solution. Say if it is given in milliliters, then we'll multiply this with 1000. Now students, हमें number of moles नहीं, हमें weight दिया है, तो मैं पहले number of moles सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सॉल्यूट के निकाल लूंगा, और वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट. वेट है उसका 4 ग्राम, मोलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH. सोडियम इज 23, oxygen has atomic weight 16, hydrogen has 1. So students, this is exactly 40 gram per mole. So we have 4 divided by 40. नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे निकाल लेंगे. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 250 मिलीलीटर इंटू व्हाट 1000, एंड यूनिट इज मोल पर लीटर. नाउ स्टूडेंट, सॉल्विंग दिस इज व्हाट 250 4s are 1000, so we have 4 and 4, they cancel out, so this is what 4 divided by 10. So students, this is 0.4 moles per liter, or we can simply write it as 0.4 and then capital M. So capital M means moles per liter, और इसका मतलब है 1 लीटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स हुए, 0.4 moles. So students, this is how we find molarity of a solution. Now students, in next lecture we will discuss the other methods, that is strength हो गया, then we will discuss normality, formality, etc. So students, that is all for today. Thank you.